بریک کے بعد اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اس وقت صدر آصف علی زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس دن کو منانے کا مقصد پاکستان کے ترقی اور خوشحالی میں پاکستان میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا کردار کا اختراع کیا جائے. I think, ladies and gentlemen, the speech is to be put to another day. I have to talk from my heart. ہمارے یہاں پاکستان میں we are the age, we are the generation جو 70s سے جو پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے بعد ہوا اس کو ہی آئینی ہم گواہ ہیں. میری جنریشن، آپ کی جنریشن شاید نہیں، بہت سی جنریشن شاید نہیں، مگر میری جنریشن گواہ ہے. اور تب سے اس زمانے تک سے ہمیں جس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا، پھر ہمیں کمزور کر کے اور پھر ایک محلے کی ایک ہمارے پڑوس ملک کی جنگ میں، تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کسی کی غلطی ہے، ہماری ہی غلطی ہے. ون شوڈ سی بفور ون لیپس. اور اس کی آفٹر افیکٹس وی ڈڈ ناٹ فور سی، اور اس کا ریئیکشن ٹو پاکستان وی ڈڈ ناٹ compensate. We did not think of. We did not think that these people who we are creating or are being created by friends of short-term friends and not long-term friends, اس کے consequences کیا ہوں گے ہماری آنے والی جنریشن پہ. Now we have hundreds of madrasas who are, everybody is treating and teaching their own religion, their own interpretation of Quran, not the interpretation of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He made Pakistan for a certain particular point. He could see Modi, India, 70 years ago. آج مودی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے. اور یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت قائد اعظم نے اس وقت محسوس کی کہ ایک دن یہ ہوگا، اور اس وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے بزرگوں نے بنایا. سندھ اسمبلی آپ کو پتہ ہے، after Bangladesh Assembly was the second to pass the resolution of Pakistan. So we passed the resolution of Pakistan. My father as a youngster was in the Muslim League, اور بنا کے رہیں گے پاکستان. So whatever we did was in the right direction, but then the world powers are the world powers. ٹوڈے غازہ پہ جو میزائل جا رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ مسلمان ہے آگے، یا یہ کرسچن ہے، یا کسی اور قوم کا بندہ ہے. That missile is a missile. And if you think that there are no Christians in Jordan or no Christians in Gaza, you're mistaken. There are many, very many of them. But they are also being sacrificed in world politics. So 40 years we were in the neighborhood with a war mandate, with a war mindset, and the after effects we did not think of. Okay, this is our nation, this is our country, this is our children's future, and we intend to abide by it and live by it and make sure. And you are all our children.
जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, यू आर ऑल आर चिल्ड्रन। ये कोई बात ही नहीं है कि 5% और 2% और 10%, ये तो ओवर मेरिट होना चाहिए कि मेरिट पे जो बच्चे आ रहे हैं उसके अलावा 5%, एंड इन एवरी डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट one department of government department, from education to police to other departments, we should have reserved seats for minorities and try and push them up rather than push them down. So, with coming from a province, or that time maybe all this was sin, there is a famous couplet by Shah Abdul Latif Bhittai कि मुल्क मिरई मुड़ई मंसूर कोही कोहंदे केतरा। जब इराक में मंसूर हिलाज को शहीद किया तो उस पे शाह लतीफ़ अब्दुल भिताई ने ये बैत कहा। तो हम सिंध के लोग उस धरती के लोग हैं, हम बगदाद का दर्द भी अपने दिल में रखते हैं, हम दुनिया का दर्द अपने दिल में रखते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं। और अब भी हम चाहते हैं कि जितनी हो सके हम आपकी फैसिलिटेशन करें। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं ये एहसान किसी के ऊपर नहीं कर रहा, दिस इज़ माई ड्यूटी, इसका मैंने कसम उठाया है। एंड आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड ऑन योर बिहाफ फॉर द बिलीफ ऑफ माई ओन सेल्फ, नॉट जस्ट द बिलीफ ऑफ योर सेल्फ, माई सेल्फ। मैंने कसम उठाया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, और मैंने हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना से वायदा किया है उसकी कब्र से कि हम आपका, पाकिस्तान का और हर इंटरेस्ट संभाल के रखेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मौला ने हमें ताकत दी, तो हम माइनॉरिटी डेज और उसके साथ फॉलो अप वो भी फॉलो करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, पाकिस्तान खपे। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि हमें पराए मुल्क की जंग में झोंक दिया गया, हम माजी में किसी और जंग का हिस्सा बने जिससे रियासत को नुकसान पहुँचा। आज के दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की में अक़लियतों की खिदमात का एतराफ़ करना है। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। कायदे आज़म ने भारत में मुसलमानों का मुस्तक़बिल देख लिया था। मेरे वालिद भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे। आज मोदी की हुकूमत में कोई अक़लियतें महफूज नहीं हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से ख़ुसूसी ख़िताब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।